Hello, hello. As promised, your boy is back with another live stream, and 8:30, as I promised, I'm back. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. Let me just share the link and check if everything is working fine. ठीक है. Also, who are the people जिन लोगों ने ट्रेड लिया था, हमारा जो मॉर्निंग वाला ट्रेड था, राइट? मॉर्निंग में जो सेशन हुआ था, टेल मी हाउ मेनी पीपल वर देयर टू टेक दैट ट्रेड. ओके, I'll show you the result. मैंने बोला था कम्युनिटी में अपने शेयर करूँगा. आई डिड शेयर इन द कम्युनिटी एंड यू विल बी एबल टू सी दैट वेरी सून. ठीक है, कूल कूल कूल. ठीक है, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ लाइव नाउ. ना कूल. ठीक है, यहाँ पे डाल दिया. फटाफट फटाफट आ जाओ, जो लोग नए हैं फटाफट आ जाओ, शुरू करते हैं फिर. ठीक है, ठीक है. लिंक मैंने शेयर कर दी है. अब जिन लोगों को आना है दे कैन कम एंड जॉइन दिस लाइव एंड यस वी कैन कंटिन्यू नाउ फाइनली. ठीक है, मॉर्निंग के एक बार रिजल्ट तुमको दिखा देता हूँ मैं ट्रेड के. कंटिन्यू. हाउ मेनी पीपल आर देयर? ओके, हेलो कृष्णा. कृष्णा इज़ बैक. मॉर्निंग का जो ट्रेड था हमारा, आई विल शो यू गाइज द रिजल्ट फॉर दैट. दिस वाज द ट्रेड. ठीक है, ट्रेड हमने कहाँ से कहाँ लिया था. आई होप यू गाइज रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट दैट ट्रेड एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट ट्रेड. ठीक है, हेलो टिकी टिकी, हाय भाई, हेलो हेलो हेलो. ठीक है, हमारा मॉर्निंग में ट्रेड था एंड क्विकली वो ट्रेड भी हमारा बढ़िया अच्छा खासा चला गया. ठीक है, now market is in the zone that it has created and one of the best zone that you will be able to see, right? Great supply and demand, you see here, right? Great supply and demand, I love this, right? And there is this internal supply demand. cool. ये अभी तक हमारा पूरा ओवरव्यू है गोल्ड को लेकर. एंड मॉर्निंग में हमने कहाँ ट्रेड लिया था, जल्दी बताओ फटाफट. कहाँ ट्रेड लिया था हमने मॉर्निंग में? where where it is, tell me. this. ठीक है, this area, right? और मैंने क्या बोला था उस ट्रेड लेते हुए, दैट आई नो द रीज़न दैट वाई एम टेकिंग इट्स अर्ली एंट्री बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर इट. ओके, एंड द रिजल्ट यू कैन सी, दिस इज द $550 वी हैव बुक्ड देयर. कूल टुडे. and yes, let's come back. What you will be able to see right now, okay, let me just analyze the pretty obvious zone जो हम पहले analyze कर लेते हैं. There is no fair value gap at this level, there is no fair value gap at this level. Market is pretty much moving nicely, right? But at the same time you'll be able to see that market is rejecting from this area, this 1 2 3, right? These are the 3 points that market has rejecting, but doesn't mean that market is not gonna like is gonna come directly नीचे. ठीक है, अभी इस पॉइंट पे डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगा. गोल्ड डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा. इट हैज़ टू अक्यूमुलेट, इट हैज़ टू डू समथिंग एट दिस पॉइंट एंड देन इट विल कम डाउन, राइट? यहाँ से एक रिजेक्शन तुमको देखने को मिल रहा होगा ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. दिस रिजेक्शन इज ऑल्सो इस तरीके से कि यहाँ पर तुम कंटिन्यूस नहीं सोच सकते कि मार्केट नीचे आएगा. ओके, यहाँ पे डेफिनेटली देर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी एट दिस एरिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. मार्केट विल टेक दिस लिक्विडिटी वेरी मच सून. ओके, इट हैज़ टू टेक दिस लिक्विडिटी एंड देन वी कैन थिंक कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ से हम नीचे का तरफ देख सकते हैं कि मार्केट जाएगा. अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी सेल नहीं करेगा इस एरिया से. इस एरिया से तुम कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से सेल नहीं कर सकते. ठीक है, एज प्रॉमिस्ड वी हैव बुक्ड द प्रॉफिट फॉर द मॉर्निंग एंड इवनिंग में भी हम अभी आ गए हैं. टुडेज फ्राइडे, सो विल बी एबल टू सी सम गुड मूव्स इन गोल्ड. ठीक है, BTC भी जैसे मैंने बोला था, BTC किस तरीके से मूव करेगा मैंने तुमको इजीली बोला था दैट दीज आर द नेक्स्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम जहाँ पर BTC इवेंचुअली BTC इस लेवल पे जाएगा एंड विल मूव टू दिस एरिया, राइट? एंड इट हैज़ टू कम डाउन टू दिस एरिया, देन वी विल बी एबल टू वी कैन प्लान समथिंग. समझ रहे हो? ये सेलिंग ने लिक्विडिटी स्वीप
नॉट रियली, अभी तक थोड़ा वेट करो, ठीक है, वेट करो। बट टेल मी हाउ डू यू लाइक द मॉर्निंग का ट्रेड, ठीक है। कम्युनिटी जो हमारा चैनल था वहाँ पर मैंने वो शेयर कर दिया है उसके रिजल्ट्स, ठीक है, मॉर्निंग का। एक बार तुम जाके चेक कर लेना, नीचे लिंक है, वहाँ पर मैंने शेयर किया था। सारे जो लोग थे मेरे साथ उन लोगों ने ट्रेड लिया था। आई गॉट द स्क्रीन शॉट। आई थिंक समवन मेड $300, समवन मेड $700, ठीक है। दीर 4-5 स्क्रीन शॉट्स आई गॉट, दे टुक द सेम ट्रेड एट दैट पॉइंट, ठीक है। एंड या प्रीटी नाइस, प्रीटी नाइस। यहाँ से तुमको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा होगा 10 मिनट पे। वट यू विल बी एबल टू सी ऑन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर पे तुमको क्या देखने को मिल रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यू विल बी एबल टू सी दिस लिक्विडिटी स्वीप, ओके। दिस लिक्विडिटी स्वीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। It has taken all the stop loss that was there, but at the same time the liquidity sweep has been happening from like past like 1 day or something like that, right? ये वाला एरिया भी liquidity sweep था, ये वाला एरिया भी liquidity sweep था, but this was a very great liquidity sweep, right? There are high chances that gold will move to this area, okay, because there is a lot of liquidity here, and you can see this a great liquidity sweep, okay. What we can see on 1 hour time frame, 1 hour time frame, we'll be able to see some sort of FEG just for the confirmation, and then we can plan something, ठीक है। cool, moving nicely, and थोड़ा वेट करो, आज क्रेजी मूव्स आएंगे, एंड गोल्ड इज ट्राइंग टू गो अप, ठीक है। 1 2 3 इट हैज़ टच्ड 3 times टू दैट लेवल। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, स्टिल वी आर नॉट गोना बाय। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद भी वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशंस, तभी जाकर हम कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। नाउ साइडवेज, नो, इट्स सैटरडे ब्रो, सॉरी इट्स सैटरडे, आई एम सेइंग इट्स फ्राइडे नाइट। तो साइडवेज का थोड़ा एक्सपेक्ट मत करना अभी फ़िलहाल मार्केट को साइडवेज में जाने में, ठीक है। कूल, ठीक है, नाइस लिक्विडिटी स्वीप हियर, ओके। हाई प्रोबेबिलिटी दैट BTC will continue going to this area, okay, just a possibility, no confirmation, so we're not gonna trade, ठीक है, वेट करो उसका भी। आगे यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर नो साइडवेज, मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, दैट इज़ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। व्हाट यू कैन सी ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, सी नाइस मूव, ओके, आई एम नॉट गोना डिनाई यहाँ पर बट अगर तुम देखोगे जो लास्ट टाइम करंट हाई था, दिस वाज द करंट हाई लास्ट टाइम का, ठीक है। अभी तक ये वाला ब्रेक नहीं हुआ है, और उसके बाद ये वाला करंट हाई है। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड कि मार्केट ये वाला हाई अभी अचीव करे क्विकली। नाइस, मूविंग नाइसली। I wanted to buy at this level, by the way. I wanted to buy at this level after this one. After this week, I wanted to buy at this level, but I was busy. I was busy somewhere, so I didn't. What was the reason behind it, right? The reason was this candle and this liquidity sweep. Okay. So now what is going to happen? Okay. Gold ने 8:30 बज गए, 8:30 के दौरान exactly यहाँ से breakout दे दिया. So now the next move is कि एटलीस्ट इस लेवल पे जाएगा, इस लेवल पे जाने के बाद यहाँ से तुमको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, एंड द रिजेक्शन के बाद विल सी व्हाट गोना हैपन। कूल, ठीक है, होल्ड करो, कोई भी यहाँ से बाइंग सेलिंग नहीं करेगा। अगर तुम ऑलरेडी बाय पोजीशन में हो, गुड फॉर यू, ठीक है, बट उसको थोड़ा होल्ड करना। बट एज ऑफ राइट नाउ जो लोग अभी कोई भी पोजीशन में नहीं है, नॉट इवन बाय, नॉट इवन Mazi Finance messaged me that yes, the 100% bonus offer is going on right now on Mazi Finance, and you can deposit some capital, whatever capital you want to deposit, and you will give the 100% bonus, ठीक है। वो बोनस तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा फ्रॉम जो भी तुम्हारा ट्रेड कर रहे हो। अगर तुम्हें थोड़ा लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो डेफिनेटली तुम्हारा कैपिटल ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके तुम अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन साइन अप फॉर द अकाउंट, ठीक है। जीरो स्प्रेड अकाउंट, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर इन 2026 एज पर द रिकॉर्ड एंड एज जितना मैं ट्रेड कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। चलो,
आई थिंक अगर 2026 में इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी देन माजी फाइनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग विथ. कूल, सिंपल, नो प्रमोशंस, कोई पैसा वैसा नहीं मिला है मुझे. इट्स प्योर व्हाट आई रियली यूज़. ठीक है, मेरा एक एक्सएम में भी अकाउंट है, माजी फाइनेंस में भी अकाउंट है. इससे पहले भी मैंने लोगों को देखा, जब मैं एक्सएम में ट्रेड लेता हूँ, जब मैं माजी फाइनेंस में ट्रेड लेता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस. और मैं सेम लॉट के साथ ट्रेड लेता हूँ बाय द वे. ठीक है, सो एक्सएम में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, आई एवरीबडी नोज़ दैट. एंड अगर तुम्हें वो स्प्रेड थोड़ा कम करना है, अपने लॉसेस थोड़े बचाने हैं, प्रॉफिट्स को दुगना करना है, देन गो फॉर माजी फाइनेंस. ठीक है, ओके. नो, आई एम नॉट टेकिंग इट रॉन्ग, बट लाइक अगर तुम्हें पता होगा कि रिव्यूज़ किस तरीके से काम किए जाते हैं. ठीक है, जो भी सारे रिव्यूज़ वाली कंपनीज होती है, सम सॉर्ट ऑफ की बोलते ओ वी आर गिविंग ऑनेस्ट रिव्यूज़, दे वट एवर द रिव्यूज़ दे टेक ऑन सम प्लेटफॉर्म, राइट, उसको रिव्यूज़ निकालने के लिए भी वो लोग पैसे मांगते हैं. समझ रहे हो, वो रिव्यूज़ निकालने के लिए पैसे मांगते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो पैसे डिमांड करते हैं लोगों को. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो इट्स रिव्यू वाला, इट्स अ होल, इट्स अ बिजनेस मॉडल, राइट. तो डोंट थिंक कि कुछ रिव्यूज़ कहीं पे तुमको दिख रहा है कि ओ यहाँ पर ऐसा हो सकता है या पर ऐसा हुआ है पहले, राइट. रिव्यूज़ के बेसिस पे तुम देखोगे या पर्सनल जो यूज़ करोगे उसके बेसिस पे देखोगे. ठीक है, जो भी तुम कंपनीज बोल रहे रिव्यूज़ वाली, दे ऑल आस्क फॉर मनी, वो रिव्यूज़ हटा देते हैं. समझ रहे हो, तो इट्स नॉट, नथिंग इज लेजिट. सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो. No, I'm not taking it wrong. Okay, it's just your perspective, and that's completely fine. That is my personal opinion. I am using it, and it's working in my favor. So, yep. ठीक है, नाइस मूव. 4 मिनट वी नीड टू वेट मोर. ठीक है, 4 मिनट बाद हो सकता है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आए. रिट्रेसमेंट अगर नहीं भी आया, ऑल्सो फोकस ऑन दिस. ओके, focus on this. Okay, and one more thing that I want to mention, अगर आप like the link is in description office obviously, right. अगर वहाँ से अकाउंट क्रिएट करते हो, वट एवर द प्रॉब्लम्स यू gonna फेस, अगर कुछ भी इशू आता है, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली ऑल्सो. ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट दैट यू विल गेट अगर आप नीचे गए लिंक के थ्रू अगर आप साइन अप करते हो तो. ठीक है, हेलो कृष्णा, हेलो एवरीवन, हेलो डेविल, हेलो राजेश, hello tick ticky. Bro, what's your real name? Tick ticky, what is your real name? Nice. 3 minutes for this one. क्या बोला था? What did I just told you? What has happened? जब मार्केट यहाँ पर था, right? I told you it's gonna go up and it's going up. It's gonna break this high. There's high possibility that it's gonna break this high also. ठीक है, BTC is gonna most probably break this high also. Cool, ये भी ध्यान में रखना. BTC भी ध्यान में रखो, and then gold को भी थोड़ा ध्यान में रखो. You see that, ठीक है, एक ब्रेकआउट हुआ, स्विंग. ओके, ठीक है. what is there और क्या है ऊपर? इज देयर एनी गैप दैट वी नीड टू मूव इनटू? ठीक है, नाइस. Enough for buying at this point. I feel like market is gonna reverse from this area and it's gonna create like a very big wick at this point. And mostly जो buying में already बैठे लोग, market is gonna take them out very soon. Most probably market is gonna take them out. ठीक है. So yeah, but as I told you, there is no confirmations as of now. So randomly अगर तुम ट्रेड करते हो then go for it, but we do not take randomly. ठीक है, randomly ट्रेड हम नहीं करते. हम जो भी करते प्लान के साथ करते, तो वेट फॉर द प्लान. जैसे प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा. And yes, you can subscribe to the channel, people who are watching here, right, people who are watching, subscribe to the channel, like the stream, right, that is very important because then if you like, then more people will come here and they will learn trading for free. ठीक है, कुछ भी questions है you can ask me in the DM and I'll be able to help you. Hello brother, hello भाई. प्रत्युष, what's up प्रत्युष, welcome back to the stream. ठीक है, so अभी थोड़ा वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट एक स्वीप तुमको देखने को मिलेगा. ठीक है, गुड. 1.5 मिनट बचा है ये वाले कैंडल में. अगर ये वाला कैंडल दोजी क्रिएट होता है देन दैट्स अनदर कंफर्मेशन दैट इट माइट कम डाउन. बट जितना भी गोल्ड का भी बुलिश पोजीशन में चल रहा है,
Karamkar. Okay, new here. Okay, Pratyush, you're new here. Welcome to my stream. Subscribe to the channel. Turn on the notification so you will be able to see me daily. ठीक है, हम डेली स्ट्रीम करते हैं 2 टाइम, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में. ठीक है, मॉर्निंग में वी already booked this profit. This is the morning profit. I took this trade on stream and then I told my people that I'm gonna share this in my community and I did the same and people with me they made the profit. ठीक है. Cool, interesting, not bad. ठीक है, interesting I would say. Hold up. What is the one thing that we need to focus here? Okay, this is one of the good setup that anybody should trade and people should go for this, but right, we don't have any confirmations for this because overall it's bullish. Okay, overall it's bullish and there are possibilities that it might continue going up. There is a lot of liquidity at this area. It's not gonna come down very easily. I think the position what I am going to do is wait for the liquidity sweep. Yeah, you can wait for that, or after liquidity sweep also it might just go up. So we don't have any confirmation set, so we can't assume, right? Never assume the market, never assume that how it's gonna work. Never assume that. ठीक है. What is happening on the 1 minute time frame? I love 1 minute time frame. Okay, 1 minute time frame पे definitely it's coming down. It's trying to come down, but this is like a support. Now it's gonna take support from this area and it might bounce from that area. ठीक है, there are high possibility that it's gonna bounce from that area. But you see this, okay? You see this. If we break this line, okay? If market comes to this area, okay, and if it breaks this, what is the next point? This is a lot of liquidity. So in order for gold to go up, तुम समझ रहे हो, अगर गोल्ड को ऊपर जाना है and to take all this liquidity that is pending at this area, right, जो कि already इस एरिया की अगर liquidity pending है और उसको निकालना है like उस लेवल पे, it has to come down and take this liquidity because last time भी it did not come to this level. तुम समझ रहे हो, you need to wait this area to take out and then we can see something like this कि इस एरिया में आके मार्केट अच्छे से चला जाएगा. ठीक है, फॉर कंफर्मेशन फॉर द चोट. ओके, कुड बी. ठीक है, 2 black candles, nice move, right? Now the gold is inviting the sellers. There are definitely people who are thinking right now that we should sell from here. There are definitely people in the market right now that they are seeing this, like, you know, this candle rejecting from this area and they are thinking that, oh, I think we should sell from here because it's going down, right? You see this area, you see this, oh, we should sell, but like, hell nah, you're not gonna sell from here, right? What is gonna happen? It's gonna take support from that area and it might jump up. Do we have the confirmation? We don't have any confirmation, so we're not gonna sell as of now. Okay. Bro, it's been more than 4 years. 4 years. Go check out my Instagram, that is there. I've been uploading a lot of educational videos on this channel also. I have made a full playlist of like a price action, basic price action, and also I'm working on a course. More than 60 videos are gonna be there in the course and it's gonna be free for most of you all, right? जी लोगों को ट्रेडिंग का टीवी नहीं पता है, उन लोगों से लेके फ्रॉम द एडवांस पीपल, ICD, SMC, bring whatever you have. ठीक है, all everything is gonna be in that course, so be ready for that. ठीक है, क्या हुआ इन द नेक्स्ट लास्ट. सो ऑल्सो मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ, कैंडल जो है हमेशा अपना जो कैरेक्टर है लास्ट के 1 मिनट या लास्ट के 2 मिनट में अपना कैंडल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है. ठीक है, सो हाउ आई सी द कैंडल, हाउ आई लुक एट द मार्केट, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ मोस्ट ऑफ द पीपल लुक एट द मार्केट, राइट? आई लुक एट द मार्केट फ्रॉम like a perspective of like it's like a movie going on, right? This is like a story. Every candle is telling me the story, okay, and why it is creating the wick, why the body is like that, why market went to that area and this area. I know reasoning for each and everything. जब तक मुझे किसी चीज़ का reasoning नहीं पता होता है, I do not go for any kind of trade or any kind of confirmations.
You're getting my point? I am pretty sure that the reason behind that market is doing this, right? It might want to invite some sellers, right? You see this move, you see it's a very crazy move, right? It's a very crazy move. But the reason is that I am not gonna fall for this move, because overall structure I'm seeing is bullish, right? Just because market is giving me some kind of black candles, that doesn't mean that I'm gonna sell from here. You're getting my point? Because I want to preserve my capital. I don't want to lose. I don't like to lose, right? Same here. Reason 4 is that I great. ठीक है? You see this? We call this a manipulation, right? But don't be surprised if you see the next candle like this, okay? Because it's still bullish. I told you, right? जो लोगों ने यहाँ से definitely buy sell किया होगा by seeing this, just imagine that people are selling from here, okay? Just imagine people are selling from this is their area, okay? And this is their XYZ target. So many people are doing this right now. ठीक है? Imagine करो यहाँ से तुमने sell किया है. What is gonna happen to you? Okay, just wait and watch. Damn. Crazy. Nice. Oh, is there any news today? Why? Shit. I love this. ठीक है? Definitely, जो मैंने बोला था यहाँ से जिन लोगों ने sell किया है, what's happened? I think they took like a TP. Not really. Okay, very small candle. Too much manipulation right now. Okay, I am not going in any kind of trade right now. I'm not going for any trade right now. Okay, this is where most of the people get stuck. You see this? It's lot of orders pending at this area, dude. Lot of orders pending at this area. Okay, definitely. What happened? फुलफिल हो गए सारे सबके ड्रीम्स, ठीक है? बड़ी कैंडल दिख गई तुमको, फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है? व्हाट इज देयर एनी न्यूज़ टुडे? व्हाट इज 16th of Jan, right? there is nothing still. ये जो मूव क्रिएट हुआ है अभी, दिस इज नॉट because of any technical analysis. This move is not because of the technical analysis. This move is completely on the basis of the fundamental. Okay, it does not make sense, but yeah. so many sellers are gonna just sign up for this move. After this move, so many sellers are gonna be in this trade. I feel like market is gonna take all the sellers, dude. Honestly, I'm telling you. ठीक है, good rejection. We wanted something like this. Breakout हुआ, definitely. But the breakout was very harsh. तुम समझ रहे हो? You see this? Very harsh. ठीक है? Yes, brother, you're right. ठीक है? Nice. It might come to this level, ठीक है? It might come to this level. I'm not saying it cannot, okay? It might come to this level. But we need to follow the overall structure, right? What was the reason behind this candle? It just came down. Randomly it came down. Do you think it's because of price action? If you think that is because of price action, then you need to learn more. It's not because of the price action. Lot of orders has been executed. Exactly, love that. And now market is gonna do its thing. Cool. As I told you, came to this level. Nice. Pretty nice. ठीक है? Good area this is, ठीक है? Mostly you see this, यहाँ से mostly rejection आया इस वाले area से. Okay, इस वाले area से mostly rejection आया. Okay, so don't be surprised अगर यहाँ से फिर से rejection तुमको देखने को मिलता है तो.
but still it's coming down. You see this, very nice move, but definitely इसको fulfill करने भी market फिर से आएगा. As I told you, like अगर if market wants to go to this level, it has to come down and take this liquidity, right? I told you before, and I'm telling you again. You just wait and watch now, okay? What's gonna happen? Four five 84. Yeah, could be high possibility of like going there. Okay, crazy boom. Yes, exactly, crazy boom. It's a news, I think. Yeah, but there is no news official, right? There is nothing official, right? Because I checked on Forex Factory, there is nothing official. So who are these people? This is like market mover. These are the people who are doing this, right? So अभी क्या होगा? Definitely बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा. इन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर है. हमको इस लेवल पे मार्केट लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, टू टेक ऑल द स्टॉप लॉसेस. तुम समझ रहे हो? दिस सपोर्ट विल बी गॉन. This time the support will be gone. Yeah, it's already gone. See, it's coming down. What is this? This is crazy. And it might fall more. Okay? Chalo bhai. Chalo bye bye. Bye brother. See you tomorrow. Subscribe to the channel before going. Okay? And turn on the notification. If you only feel like doing it. Don't do it otherwise. Good. ठीक है? This area. Okay, now it's gonna reject. Is it gonna reject? We don't know. We're just gonna wait and watch. If there is no support, if there is no setup, if there is no structure that I am able to see, I'm not gonna trade. That is my basic logic. Okay, I am not gonna trade because market is falling. I'm not gonna trade if market is like going up, going up, going up. Okay, that is not how we trade. Okay, we wait for the confirmations, we wait for market to stable, go to certain zones, certain points, and then we can think of something. Okay, what happened? People who were in bullish, people who were bullish, imagine people are buying from this level, right? People, everybody got out here. You're seeing this? Everybody got out here. If people were this, they got out here, they got out here. You see this? A great liquidity sweep you are able to see here, and don't think it's not gonna fall more. It might fall more. Okay, it might fall more. This is a very rare moment where you will be able to see BTC, sorry, a gold doing this. BTC इतना easily, इतना crazy तरीके से move mostly नहीं करता है. Okay, imagine this amount of orders are gonna be at this area, dude. Just imagine the amount of orders are gonna be in this area. This has happened before. It's not like this hasn't happened before. Okay, when did this happen before? Okay, let's find out. Let's find out. You see this? This is just one candle, dude. This is just one candle on 15-minute time frame. This is one candle, and it's still going down. Still going down. Do you call this a price action, or this you call this some fundamental bullshit that people are doing behind the back? Do you call this? All the buyers, bro, they're fucking out of this market. They're out. Look at this. All the buyers are gonna like take their stop losses and go home. Okay? People who are holding for this high, bro, they're out. They're done. They're going home now. They're packing their bags, dude. Look at this. Look at this shit. Crazy. Okay? Great liquidity sweep. Nice. Okay? Great liquidity sweep. 2 minutes left. Okay? 2 minutes left. So what is gonna happen? 2 minutes में हो सकता है this candle can reject about this level also. Okay, it might correct, it might do some correction, or it might fall. You see this? Great. This is the one level that I need to get filled. Okay, I want market to fill this level. What is this level? Okay, this level is gap up. Okay, there are a lot of resting orders at this area also. You see this? Still going down. Still going down.
आज गया सब. हाँ ब्रदर, बट वी लाइक वी डोंट हैव टू वरी. हम लोग ट्रेड में नहीं है, तुम समझ रहे हो. द बेस्ट पार्ट इज इस मूवमेंट में हम लोग ट्रेड में नहीं है. बिकॉज क्यों ट्रेड में नहीं है? अगर एक कैंडल इतना मतलब मैनिपुलेट कर सकता है, इतना फास्ट तरीके से नीचे जा सकता है, हो सकता है उतने फास्ट तरीके से ऊपर भी जा सकता है, राइट. सो आर वी लाइक गैम्बलिंग देयर, आर वी लाइक गोइंग फॉर दैट? नो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं ट्रेड लेंगे यहाँ पर. यहाँ पर जब ये ब्रेक किया तभी मेरे को पता था नेक्स्ट लिक्विडिटी यही पर है, मैं यहाँ से सेल कर सकता था, बट आई डिड नॉट, बिकॉज दैट जस्ट लाइक राइडिंग अ वेव, राइट. आई डोंट राइड द वेव, आई ब्रिंग माई ओन ओशन डूड. सो या ठीक है, गुड गुड फॉल. सारे जो बाय वाले थे घर पे चले गए. चलो, सबके स्टॉप लॉस हट गए, सबके. यहाँ वाले भी हट गए, यहाँ वाले तो कब के हट गए, क्योंकि इतना तो कोई होल्ड नहीं कर रहा ना भाई, समझ रहे हो. Damn, crazy, crazy, this fall is crazy. Nine o'clock candle. Let's wait for 9 o'clock candle. ठीक है. Let's see what's gonna happen at 9 o'clock. Okay, crazy. ठीक है. Exactly. The SL is very important. Any pair, not even only like gold, right. अगर तुम किसी भी चार्ट, किसी भी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट इवन थिंक कि ओ मैं मैनुअली कट कर दूंगा या नहीं जाएगा उस लेवल पे. नहीं डूड, अभी यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रहा है, फिर से नीचे जाएगा, समझ रहे हो. वही चला गया. यू सी दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड नाउ इफ यू थिंक दैट ओ यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, नो, यू आर टू लेट. यू आर टू लेट फॉर दैट. You are too late for selling, my brother. Okay, now what's gonna do? Market is gonna take all the stop loss that are above this level, and above this level. Okay, it's gonna take all the stop loss very fucking soon. Okay, बस wait and watch. ये move ऐसे नहीं आया है, ये move लाया गया है for some reason. समझ रहे हो. Understand the basics. Great liquidity sweep you'll be able to see on like how 30 minute, 1 hour. Okay, cool. On 1 hour, right. चल ठीक है, अभी वेट करते थोड़ा, अभी मूव आएगा, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे. प्लानिंग के लिए थोड़ा टाइम दो, बिकॉज डेफिनेटली ऐसे जब मार्केट की कंडीशन ऐसी हो तब तो कुछ प्लान नहीं कर सकते. 4161 आई एम इन बाय स्कैल्प. 4161, लेट मी सी ब्रदर. यू आर इन बाय. Why you're in buy? I'm telling you, I'm here, bro. I'm sitting. Why you're buying from that level, dude? It's not gonna go up from there. It's not gonna go up from there. It's gonna manipulate more. You see that? This is your buying level, right? This. You said this, right? 61 you said. Oh, this one. No, dude. You entered too early. You entered too early. It's gonna come to this level. Most probably. Okay, wait. It wants to fill the gap. It wants to fill the gap. 101%. Yeah, bro. I think you're stopped out now. Or no? 61. 5161. Do not buy, do not sell. People who are here, ठीक है? Tell your friends, tell your family, tell everybody. Do not fucking buy right now. Or do not fucking sell. Okay? At this point, the only thing you can do to market to come to certain level or certain position to get stabilized a little bit,
जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है यू आर नॉट गोना बाय और सेल. जैसे स्टेबल हो जाता है विल प्लान समथिंग वेरी क्विक. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. वी विल प्लान समथिंग वेरी क्विक इन फ्रंट ऑफ योर आइज. ठीक है. राजेश, व्हाट्स योर स्टॉप लॉस? वेयर इज योर स्टॉप लॉस डूड? टेल मी. ठीक है. आई बीन टेलिंग यू. देखो, नो बाइंग, नो बाइंग, नो सेलिंग, स्टॉप्ड आउट. एग्जैक्टली स्टॉप्ड आउट. How can you buy from that level, bro? You're watching my stream, Rajesh. I've been telling you, right? I think you watch you. It's been a time that you have been watching my stream. बहुत time से आप मुझे देख रहे हो. How can you buy from that level? It's very dumb decision, dude. I hope it was a demo account. But like, I don't think so. You can take something like some trades like this on real account. That is very like not very smart of you. No, bro, it's real. Okay, tell me how much you lost. Tell me, so people can learn. The other people can learn from your mistake. So yeah, when I say wait, then wait, guys. ठीक है. I'm sitting here. $160. Yep. Right. So yeah, when I say wait, then wait. Okay, don't rush. Still, right, you see this liquidity sweep, most people can think, oh, it's going to go up from here. No, it's not going to go up from here. It's not going to go up from there. It's not going to go up from here. Market has to create this. You have to see some sort of great rejection, तब जाके तुम बोल सकते हो कि oh, it might go up from here, right? What are the rejections point? Just because this candle is creating some sort of like this, a wick to the downside, no, it's not gonna, it doesn't happen like that. ठीक है. अभी वेट करो. ठीक है, पेशेंटली थोड़ा वेट करो. अभी ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाय कर लोगे. ठीक है, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सब मिलेगा. चलो, नाइस. आई लव दैट लेवल. कैच द फुल मूव. Damn, you sure about that, bro? Send me the screenshot right now. Tell me. You sure about that? You catch the full move? That's crazy. I was gonna do that, but like I didn't because there was no confirmation, right? And I need to tell people the reason why I'm taking the trade. Without reason I cannot trade. I'm sorry. I am online in front of people, so every activity has been captured. So yeah. That's crazy. Good for you. If that is really real account and you earn that much, that's crazy. Okay. You see this good rejection at this area. Okay, but 3 minutes are still left for this candle. ठीक है, 3 minutes still left. तो थोड़ा वेट करो. अभी कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस कैन बी कम्प्लीटली अ फ्लॉड सिस्टम वेयर मार्केट इज ट्राइंग टू like catch more buyers here. You're seeing you're able to understand, right? Definitely there can be a possibility जहाँ पर market अपने buyers को invite कर रहा है. Do not enter. ठीक है, just a suggestion. If you want to do it, do it. I'm not entering. Legend. Let's go. On my Insta, dude, the Insta, why do you guys ask me this question? Like, on my Instagram, the Insta is in link in description, link in bio. I mean, there is no link for the Instagram. You just type Pradeep X Trades, you will be able to find me. Okay. चलो, क्या बोला था यहाँ पर? Just because you see this candle or you see this green candle, like whatever color this is, do you think you're gonna buy? No. Understand? Okay, save your money. Getting my point? Save your money. Let me check.
Have I got the screenshot? Haven't got any screenshot, but fine. Cool. Now people who are on the stream फटाफट like कर दो, ठीक है? Good candle, right? Good rejection candle, but still I'm not gonna buy from here. I'm not gonna buy from here. I'm not gonna buy from here. How many minutes? कितने मिनट बचे इसको ये कैंडल को? ठीक है, 4 सेकंड बचे, ख़त्म कर दे इस कैंडल को, ठीक है? अभी मैं बाय नहीं कर रहा यहाँ से, मैं बाय नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, ठीक है? कोई भी यहाँ से बाइंग नहीं करेगा, थोड़ा वेट करो कंफर्मेशन का। ये देखो, गुड लेवल पे अगर मार्केट जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, राइट? मुझे भी पता है कि यहाँ से डेफिनेटली इतना अगर पुल बैक आया है देन देर इज़ गोना बी रिट्रेसमेंट, ठीक है? देर इज़ गोना बी रिट्रेसमेंट। I will send you on Telegram. Okay, works. ठीक है, no issues. One of the member has made $6,000 on this move. That's crazy. ठीक है, but still we're gonna wait because what if it's gonna like go completely against us? तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करो. We'll be able to find the confirmation in next 5 to 10 minutes. ठीक है? I need some sort of like fair value gap, some sort of confirmations. Okay, I cannot randomly buy. And definitely अगर तुम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहे होगे, यहाँ पर तुमको एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलेगा. You see this? This is a very good rejection. Okay, this is a very good rejection at the same point. But on what basis you're gonna buy from here? Tell me. Give me one reason from what basis you're gonna buy from here. Just because market is going up, right? Definitely, we all know that market is gonna take out all the orders, right? There are a lot of orders pending at this area. You're getting my point? It has to take these orders. But on what basis you're gonna sell from? You're gonna buy from here? I'm not gonna buy from here. Hold karo, ठीक है? This is completely where market is trying to invite the buyers. See? Wait for this candle. यहाँ पर ये candle किस तरीके से close होती है, and we'll be able to find some more confirmations. Cool? ठीक है? What happened? It has created this level on this candle. It has created this fair value gap. You will be able to see, and market has entered into that fair value gap. Let's see, is it gonna reject from that fair value gap, or is it gonna invalidate that fair value gap? There are two major things that you'll be able to see. You see this? It came down. Okay, so assuming anything right now, it's gonna be very dangerous for you. Take a save your account, save your capital, and trade safely. Chalo, अच्छा rejection, nice. As I mentioned, rejection, exactly. That's what happens. अब बताओ राजेश ब्रदर, will you buy from here? No. ठीक है, अभी पूरा अकुमुलेट करेगा, तुम समझ रहे हो? पूरा अकुमुलेट करेगा, गुड कंसोलिडेशन तुमको देखने को मिलेगा. आई जॉइन योर टेलीग्राम. थैंक यू सो मच ब्रदर. Everybody watching the stream, link is in description. Join the fucking Telegram. You guys get such a solid trade there. समझ रहे हो? आज भी इतना क्रेजी ट्रेड मिला था वहाँ पे. Join the Telegram guys. Cool. चलो. 120 good. ठीक है. No issues. Okay, cool. Nice rejection. Let me go drink water. Hold up.
Guess who's back? ठीक है. Good consolidation. came down. Nice. Okay. What is this level? क्या level mark किया था मैंने? क्या level mark किया था मैंने? Yeah. Fair value gap. No. It was not a fair value gap. Yep. Now it's a fair value gap. For 1 day. Okay. ठीक है. BTC might take support at this area. ठीक है. So don't be like, oh, जा रहा है नीचे तो sell करोगे. The day looks crazy. Now I see. Good invid. No, wait. ठीक है. Remove this. Okay. All the non-important thing that all the things that are not important, we will remove that ASAP. ठीक है. We only need the zones and the important markings. We do not need extra things right now. ठीक है. Come back to this area and okay, this is fine. Looks nice. Okay, cool. Great area. Just a second, guys. My bad, guys. Just a second. Cool. ठीक है. ये वाला एरिया, इसे वाले एरिया को ध्यान में रखना. आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन जहाँ से हम एक अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं. ठीक है. अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए, बट नो इश्यूज़, वो बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है. Let me open my other account. Cool. Pranjal is back in the game. Can you guide me silver also? Yeah, sure brother. Hold करो थोड़ा. ठीक है. Do not panic because it's going up. पैनिक मत करो. तुम लोगों को बाय करना है तो इवेंचुअली कर सकते हो, बट थोड़ा रिट्रेस करेगा इस एरिया पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है. रिट्रेसमेंट ज़रूर होगा एंड दैट इज़ फॉर श्योर मोस्टली. Cool. Nice. Love that. Okay, love that.
ठीक है, रिजेक्शन, 1 minute लेफ्ट फॉर दिस वन. 1 मिनट बस वेट करो. व्हाट यू वांट ऑन सिल्वर ब्रदर? यू वांट सम क्लैरिटी ऑन दिस? ठीक है, 39 सेकेंड्स वेट करो. Just a second, guys. ओके, माय बैड, सॉरी, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था. People who are here, I really appreciate the patience, and let's start now. Let's get back in the business. ठीक है, डेफिनेटली मैंने क्या बोला था, I am not gonna buy from here. ठीक है, and there is a reason behind it that we do not have any confirmation that we can directly buy from it, right? Definitely everybody knows that market is gonna go up, right? But what are the chances that it can go up to the level that we really want it to go? तुम समझ रहे हो? तो थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, और तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके के मूव्स और आ सकते हैं. ठीक है, लेट मी गेट बैक इन टू द जोन. वाई दिस इज हैपनिंग डूड, वाई दिस इज हैपनिंग. हाँ, चलो शुरू करते हैं. सारे लोग फटाफट वापस आ जाओ, जो लोग गए थे. वी आर बैक इन द गेम. ठीक है, ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ, 1 मिनट बचा है अभी. एक चीज़ तुम्हें समझ नहीं आनी चाहिए, ये वाला मैं एरिया हटा देता हूँ. ठीक है, अब तुम ये चीज़ समझो, जहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है तुमको, लाइक व्हाट इज़ दिस लिक्विडिटी स्वीप ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम,
right? 50-minute time frame पे you'll be able to see this liquidity sweep, and at the same time on a 5-minute time frame you'll be able to see this fair value gap. Okay, okay, 5-minute FEG, cool. What am I planning now? ठीक है, यहाँ पे प्लान क्या होगा अभी? What is the next plan? मैं चाहता हूँ, I want this candle to not come to this level, but I want next candle to come to this level. Okay, then we can think of something from this area. Cool, cool. This can be a complete manipulation. I'm not saying कि oh shit यहाँ से अगर fair value आपको फिर से next candle अगर tap in करता है, then we need to wait. If that candle is gonna come to this fair value gap and invalidate, or it's gonna respect that fair value gap, that is very important. ठीक है, तो यहाँ पर तुम थोड़ा वेट करो. अभी तुमको ये वाला कैंडल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला नेक्स्ट वाला कैंडल हो सकता है तुमको मोस्टली ये वाला देखने को मिले. ठीक है, थोड़ा वेट करो, होल्ड योर हॉर्सेस एंड लेट्स वेट एंड वॉच. See, I need this fair value to get filled, bro. I need this fair value to get filled. It cannot directly go up, and it is going up, but this is the target that I'm facing, like I'm seeing, right? ये वाला अगर जाता भी तो इस लेवल तक जाएगा, यहाँ से डेफिनेटली इसको एक रिवर्स बाउंड देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कुछ मूवमेंट आता है, देन विल बी एबल टू फाइंड आउट सम गुड मूव्स. ओके, गुड इन्वर्जन. एंड what are the fair value gaps in like up when market was coming down, right? What are the fair value gaps? On 15-minute time frame there is no fair value gap. On 5-minute time frame there are few fair value gap. That was one is here, okay, and the another one is here. ठीक है, and this one was there. Oh, it did happen. No, it did not. Wait. ठीक है, these are the 3 fair value gaps at this area. That is the inverse fair value gap. I'm pretty sure market should not directly go through the fair value gap. It should directly reject थोड़ा. ठीक है, my plan is very simple. I'm gonna wait. I'm not gonna buy or I'm not gonna sell from this area. I'm not gonna do anything at this area right now. ठीक है, जैसे एंट्री आएगा I will let you all know. Let me see what other people are doing here. People are up to buy, dude. Sell them. नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती. एक चीज़ जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, जब भी मैं किसी का चार्ट खोलता हूँ या किसी का, वाई द चार्ट्स आर सो मेसी. लाइक इतना मेस क्यों होता है तुम्हारा चार्ट्स में? कैन यू गाइज नॉट कीप इट थोड़ा सिंपल? ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट हार्ड. You don't need 10 indicators. You don't fucking need 10 indicators. Everybody I look at in the trading industry, भाई चार्ट में इतना सारा कुछ भरा होता है उनके, ये इंडिकेटर, वो ये वो ऐसा वैसा. लाइक व्हाट द हेल, आर यू गाइज नॉट गोना गेट कंफ्यूज? कीप इट सिंपल डूड. जस्ट यूज द बेसिक प्राइस एक्शन एंड इट्स गोना हेल्प यू इवेंचुअली. ठीक है, बेसिक प्राइस एक्शन पे फोकस करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें, बेसिक प्राइस एक्शन पे फोकस करना है. ठीक है, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल इस एरिया से, and then we'll see. 2 minutes. So what is the next structure I'm able to see, right? This can be a very good structure. अगर मार्केट इस तरीके से फॉर्म होता है, then this is like a very good structure. अगर तुम देखोगे इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे अगर तुम देखोगे, then this is how market can fill up that gap up. Okay, this is how market can fill up that gap up. Good move. See, सिद्धू ने बाय किया था इस लेवल पे, जब एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी नहीं आया था. अगर तुम ये 2 कैंडल देख के उसके बाद अगर तुम बाय करने का सोच रहे थे, देन आई वुड से कि चल ठीक है, एटलीस्ट अ फेयर डिसीजन.
बट जस्ट बाइंग एट सर्टन पॉइंट जहाँ पर गोल्ड लिटरली डंप हो रहा है, लिटरली डंपिंग चल रही है मार्केट में, उस टाइम पर यू कैन नॉट बाय, डोंट इवन थिंक अबाउट बाइंग उस पॉइंट पे, ठीक है। तुम कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, डू नॉट बाय। सिंपल सिंपल रूल होना चाहिए तुम्हारा, कभी भी तुम ट्रेडिंग करते हो तो। ओके, लेट्स गो। गुड दो जी, आई फील लाइक थोड़ा रिजेक्शन आएगा, लेट्स सी। अगर रिजेक्शन आया तो गुड, आई वांट दैट फेयर वैली गैप टू मार्केट टू फिल दैट फेयर वैली गैप, देन विल बी एबल टू सी सम गुड मूव्स, ठीक है। जो मॉर्निंग में आई थिंक हमने ट्रेड लिया था, अगर उसको हम ट्रेड स्ट्रीम पे कंटिन्यू करते तो और मज़ा आता, बिकॉज जिस तरीके से मूव किया है उसने, इट्स क्रेजी, क्रेजी द वे इट मूव्ड। हाँ जी, ठीक है, ग्रेट, आई सी दैट रिजेक्शन आया वहाँ पर, बट स्टिल द कैंडल इज ओवरऑल इट्स काइंड ऑफ ग्रीन, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा, बट गोल्ड डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, आप समझ रहे हो मेरी बात। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, एक तो डायरेक्टली ऊपर जाना, या कुछ वेट करके लोगों को मैनिपुलेट करके लोगों के स्टॉप लॉस खा के जाना, ये दोनों में फ़र्क है। आपको समझना होगा ये चीज़ को, जिस दिन आपको ये समझ आएगा आपका जो कैपिटल है वो और ज़्यादा बचेगा, समझ रहे हो। ठीक है, नाइस। BTC good rejection, high probability that BTC might just like go up from here, ठीक है। फोर मिनट्स, you see that gold is literally struggling to go up. What is happening? It is accumulating at this point, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुमको देखने को मिलेगा इट इज़ गोइंग अप, बट इट इज़ गोइंग अप वेरी स्लो, ठीक है। सो व्हाट आई वांट, एटलीस्ट आई वांट दिस, ठीक है, एटलीस्ट आई वांट दिस, तब जाके हम कुछ सोच सकते हैं। कूल। और ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जब मैं बोल रहा हूँ कि अकोमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस लेवल पे कम्प्लीटली अकोमुलेट किया, मैनिपुलेट कहाँ किया, नीचे के साइड पे ए वाले कैंडल के साथ, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया, ऊपर की साइड पे, ठीक है। दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेशन, अकोमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, AMD, ठीक है। कूल, चलो, this is what I'm interested in, and yeah, we might able to see that, okay, let's go, ठीक है, we might able to see that। चलो 1 मिनट पे होल्ड करते हैं, 1 मिनट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है, थोड़ा हाइप करते हैं यार, थोड़ा हाइप करते हैं, ठीक है। प्योर एक्शन, सॉरी प्योर प्राइस एक्शन राइट नाउ, थोड़ा वेट करो, बिकॉज क्या होता है ना, जब तुम ऐसी जगह से बाय करते हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हो सकता है मार्केट वहाँ से रिट्रेस करेगा, देन तुम्हारे जो स्टॉप लॉस है वो हंट होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे पता है इस लेवल पे मार्केट जाएगा या गोल्ड इवेंचुअली ऊपर जाएगा, बट मुझे चाहिए सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट जहाँ पर मुझे एटलीस्ट एक कन्फर्मेशन मिले कि हाँ चलो ठीक है, इस लेवल से हम अभी ऊपर जा सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। एट दिस लेवल ऑल्सो यहाँ पर एक फेयर वैली गैप ओपन था, ये वाले जो कैंडल थी इसने उस फेयर वैली गैप को अच्छे से रिस्पेक्ट किया, देन मार्केट इज मूविंग कम्प्लीटली नाइसली अप, ठीक है। बट ये वाला एरिया अभी तक पेंडिंग है,
So what I'm waiting is that I want market to come to this area, right? Either it's gonna invalidate this fair value gap. Second thing it's gonna do that is gonna respect this fair value gap. You're getting my point? But we need some sort of confirmation in order for you to think कि हाँ चलो ठीक है मार्केट इस तरीके से अभी गोल्ड मूव कर सकता है. देन इवेंचुअली हमको तो पता ही है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, तुम समझ रहे हो. एंड यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेगा एंड यहाँ से हो सकता है गोल्ड फिर से डंप हो. ठीक है, तो जो तुम यहाँ से बाय कर रहे हो सकता है गोल्ड यहाँ से फिर से डंप हो. तुम समझ रहे हो. मैं नहीं बोल रहा कि गोल्ड पूरा ही डंप हो सकता है इस लेवल तक डंप हो. मेरा वाला जो लेवल है, मैं जिस लेवल पे गोल्ड को चाहता हूँ आना, ये वाले लेवल तक डंप हो. तुम समझ रहे हो. तो अगर तुम बाइंग का सोच रहे हो तो डोंट इवन थिंक कि इस तरीके से मूव करेगा कि पूरा ही तुमको यहाँ तक सब कुछ ईजिली मिल जाएगा. समझ रहे हो ना. तो वही है. चलो 5 मिनट में एक एक मिनट. ओके चलो, एक नया कैंडल स्टार्ट हो चुका है एंड ये वाला जो लेवल मैं एक बार मार्क कर देता हूँ. इसके नीचे रिजेक्शन चाहिए हमको ये वाले लेवल के. ठीक है, अगर बॉडी इसके ऊपर क्लोज होता है देन हायर चांसेस दैट गोल्ड विल कंटिन्यू गोइंग अप. ठीक है, बट उस पर भी हम सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट हमको चाहिए. देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से भी हम बाय कर सकते थे, बट द रीज़न इज़ लाइक देयर वाज नो कन्फर्मेशन. मैं किस बेसिस पे बाय करूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी स्वीप? नो, वन रीज़न इज़ नॉट इनफ फॉर मी. Because what if then it's gonna reverse from this area? Then it's gonna take out all my stop loss, right? Am I gonna take that risk? No. Gold or any pair that you are trading, you need to have some solid reason कि तुम यहाँ से buy क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से sell क्यों कर रहे हो. You're getting my point? And there is an order block at this area, right? Market is definitely gonna react on this area. ओके, दिस कैंडल, ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, 3 मिनट बचे इस कैंडल में, ऑलमोस्ट 3.5 मिनट. ये कैंडल का थोड़ा वेट करो एंड तुम्हें एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है अगर इस कैंडल ने अच्छा खासा मूव दिया तो. ओके, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, चलो ये वाला है हमारा लो. हम चाहिए यहाँ से रिजेक्ट करें, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए. देन अगर इसको क्रॉस करते हैं देन मेरा माइंड शिफ्ट हो जाएगा. जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके गाइज, माय बैड, मुझे कॉल आ गया था. एंड एट द सेम टाइम यू सी दैट ये मूव, ग्रेट मूव, नाइस. आई एम वेटिंग टू मच? क्या मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ? ठीक है, लाइक करो, जो जो लोग देख रहे फटाफट लाइक करो स्ट्रीम. ठीक है, हो सकता है हम नेक्स्ट 5-10 मिनट में एक अच्छा खासा ट्रेड प्लेस करें. ठीक है, तुमको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, बट तुम्हें ये समझना चाहिए कि उसके पीछे भी एक रीज़न है. ठीक है.
डू यू थिंक यहाँ से रिजेक्शन आएगा? ये डायरेक्टली ब्रेकआउट है। सिल्वर कहाँ पर है तुम्हारा सिल्वर? जस्ट अ सेकंड, मैं चेक करता हूँ, थोड़ा टाइम दो मुझे, ठीक है? थर्टी थ्री सेकेंड्स। हाउ कैन इट बी सो ईजी डूड? there should be something more to it. ठीक है, लेट मी सी। ये देखो, दो कंडीशन है यहाँ पर, ये समझना चाहिए तुम्हें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिल्वर के लिए थोड़ा वेट करो ब्रदर, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है? बी टी सी इज़ मूविंग अप, ठीक है, नाइस। बी टी सी इज़ मूविंग अप, गोल्ड इज स्टिल मूविंग अप, इट हैज़ ब्रोक दैट लेवल, ठीक है? वो लेवल ब्रेक हो चुका है। कूल, यहाँ से बाइंग हो सकती है बट टू रिस्की, ठीक है? यहाँ से बाइंग हो सकती है बट टू रिस्की, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, गिव मी सम टाइम, ठीक है? व्हाट एम आई एबल टू सी हियर? जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस, मैंने जैसे बोला था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर उन लोग के स्टॉप लॉस अभी हटते जा रहे हैं, ठीक है? बट डेफिनेटली दैट मार्केट वांट्स टू गो टू सर्टन लेवल, उसके बाद एक अच्छा खासा तुमको पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, लेट मी सी, इसमें अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है देन इट्स ग्रेट, ठीक है? Nope, 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 nope. We need some sort of confirmations. ठीक है, पुल बैक आ रहा है, ठीक है? बॉडी को रिस्पेक्ट किया है, विक को रिस्पेक्ट नहीं किया है, बॉडी को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है? याद रखना ये चीज़, बॉडी को रिस्पेक्ट किया है, विक को रिस्पेक्ट नहीं किया है। क्रेजी क्रेजी, नाइस। नोटिस दिस एरिया, ठीक है? तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, बट तुमको ये बाद में समझ में आएगा कि इतना पेशेंस क्यों है मेरे में, ठीक है? नोटिस दिस एरिया, ये वाले दो एरिया ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है? फोकस ऑन दिस एरियाज राइट नाउ। नाइस ब्रदर प्रत्युष, गुड गुड स्टफ, गुड स्टफ। ठीक है, ठीक है, बी टी सी कैन मूव लाइक दिस। हमें और क्या चाहिए, और किस चीज़ का कंफर्मेशन चाहिए? चलो, फट गया गोल्ड, एक बार रिट्रेसमेंट आ जाए उसके बाद उठा लेंगे, ठीक है? नीड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशंस अगेन, जस्ट अ सेकेंड।
ओके बॉयज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। मैं नहीं बाय करूँगा यार, मैं नहीं बाय करूँगा। आई विल नॉट बाय। आई नो बहुत अच्छी मूव है, बहुत कुछ कर सकते हो, बट हाई चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस एरिया। जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। ठीक है, आई एम सेलिंग। ठीक है, कितना डॉलर? 150। ठीक है। और थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पे, बट वेट करो, ठीक है। कितने? 200, ठीक है, $200 ऑलरेडी इन। इतना लेके निकल सकते हैं हम, बट वही है कि लॉन्ग टर्म का प्लान है। कितनी बाइंग कर लोगे? अपा वेट करेंगे। बुलिश में सेलिंग कर रहा हूँ। क्रेजी। $300 प्रॉफिट ऑलरेडी बुक्ड, ठीक है। फोकस ऑन दिस, ओके। दिस इज नॉट योर रेगुलर एज शिट ब्रो, सम।
Still in profit, no issues. It is gonna consolidate because it was a support before. Now it is taking that level as support. ठीक है? Is it rejecting off of this area? Cool. Let me see. How much is the profit? ठीक है, decent. People who are joined. People who are joined, welcome back to the stream. This is the trade that we took. I know it's a bullish market, right? I've been observing the market from last like almost 2 hours. Okay? I know it's probably gonna go up, but there is some logic behind this trade, and eventually I have like a good stop loss. Then I want my fair value gap, this level, to get fulfilled, right? Not now. I have patience, no issues, right? We're gonna hold this trade for a long time. So yeah, definitely a lot of bullish move, and gold is definitely going up. But yeah, wait for some time. And yeah, if you guys are watching, subscribe to the channel. I come live in the morning, almost afternoon, and I come live in night also. ठीक है? It might go to this level and then come down.
Nice rejection, love that. Everyone, thank you so much for joining the stream. Yep, you guys are feel free to ask me questions. Nice, not nice. I mean, time will tell, right, Pranjal? I have a logic behind this trade. It's a risky trade, definitely, right? But my philosophy is like, when I see something that I really like, I go for it. Okay. And definitely it's not gonna show its position right now, but soon you'll be able to see that. And the next thing is that once you'll be able to see that, it's gonna be kind of late. And I know this is risky trade, I know. Booking happening, but there will be a time when the buyers will book their part. Yeah, definitely buyers will book their part. I think buyers have already booked their part. Sellers did too, right? But that selling was crazy. You see that the selling was crazy. So yeah, this is one of the riskiest trade that I've took. Okay, one of the riskiest trade. It might just hit the stop loss. You're getting my point. But if it goes against with me, what I'm thinking in my head, and if it goes exactly according to my plan, then this is one of the best trade. I'll be proud of this trade, right? Because I do not. So there are simple trades, there are complicated trades. This is one of the complicated trades. You get my point. And I get more happy when something new I try and then I win in it. Okay? So this is something that I'm trying new. And yeah, you'll be able to see the results very soon. Okay. Cool. ठीक है. This happened. Cool. It is sort of creating that trend line. अगर तुम धीरे से नीचे से देखोगे, अगर तुम वहाँ पे मार्क करोगे, the reason behind rejecting that candle
it is creating that sort of trend line, and I love that, by the way. That is not against my thing. I love when market creates trend line and break through that trend line. It's not always that it is gonna like break and then go to your target. There has been different times that it just comes and manipulates and then go to the opposite direction. Okay, people who are live, just subscribe to the channel right fucking now. Okay, right now. I don't care. Right now. Nope. We'll wait. Told you, one of the riskiest trade. One of the riskiest. When the whole world is in buying position, I am shorting here. So it is a risky position, right? But I see something here. If this goes with me, I think it will sort so many things for me, because then I'll be creating another a great ass setup where everything is in your favor, like everything is in some direction, and then you take trade in some other direction because you see something like this. You're getting my point? So अगर ये trade मेरे favor में जाता है, there is lot of learning. एंड डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से भी हम बाय कर सकते थे दिस पोजीशन, राइट? आई टोल्ड यू ऑल्सो इज़ गोना गो अप फॉर एटलीस्ट दिस एरिया, लाइक हम बाय कर सकते थे. हमने यहाँ से सेल होते हुए देखा है, लाइक वी कुड हैव सोल्ड फ्रॉम हियर, राइट? बट एवरी टाइम आई सेल और बाय, आई नीड सम सॉर्ट ऑफ रीजन. आई एम अ ट्रेडर, आई एम अ रियल ट्रेडर, राइट? इट्स बीन लाइक मोर देन 5 years that I've been in the market. So we need some sort of crazy ass setups, we need some sort of crazy ass things in the market, then तब जाके हम उसको trade कर सकते हैं. We cannot trade directly, right? Right now what is happening here, you'll be able to see on 1 minute time frame that market is manipulating at this area. Okay, so the next thing is that it has to manipulate, it is accumulating right now, it has to manipulate next, right? And then it can distribute. At the same time 10 already बच चुके हैं. ठीक है, 10 ऑलरेडी बच चुके हैं. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट थोड़े टाइम बाद मूव्स आएंगे, बट मूव्स डेफिनेटली आएंगे. ठीक है, तो या 30 सेकेंड लेफ्ट फॉर दिस कैंडल, एंड या विल सी व्हाट्स गोना हैपन. जस्ट अ सेकेंड. We're back. Okay, are we back? I don't count SLs, I don't count pips, I count my capital. So it's just the position, because when it comes to you have a lot of capital, you do not actually count pips, but you can see how many pips it is, you can see. ठीक है, cool. I'm not gonna talk more. ठीक है, I'm not gonna talk more, I'm just gonna patiently wait. Either we win or either we learn. That's it. That's the two option way. We do not have any other option in the market right now. We are not going for any other thing. ठीक है? What is the current position right now? Yep. ठीक है. No issues. We were in profit, right? Don't enter. I would suggest don't enter. It is too risky right now.
Okay, when I will tell you next time, when I come live daily, I give you 100% setups that I know that this is gonna be when I say I know where it's gonna go, then only trade. Right now it is just like I am testing something. Okay, right now I'm testing one of the thing that I've been practicing. I've been back testing for a long time. I've been practicing this, right? So if it goes with me, then I will be use this in the future, and I will tell you that use this. Right now I'm just testing right now. ठीक है, whole market is bullish. Wait, okay, selling is risky right now, so wait. Okay, this is one of the tests that I'm doing. I've been back testing, so yeah. Yeah, we'll share once. This is not the strategy that I usually trade, by the way. Okay, my strategy is very different. I think most of the people know about it, and I've shared so many times. I'm also gonna make a video on it on YouTube, full fledged, जहाँ पर पूरा strategy मैं share करूँगा, and then तुमको अच्छे से उसके बारे में पता चल जाएगा. उसको तुम यूज़ करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो जब भी उस कंडीशन में मार्केट आ जाए. ठीक है, विल शेयर दैट वेरी सून, डोंट वरी. यप. एंड डेली लाइफ स्ट्रीम देखो, उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझने में आएगा. बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ. जिस तरीके से मैं मार्केट एनालाइज करता हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेड्स फाइंड करता हूँ, जिस तरीके से मैं पेशेंटली वेट करता हूँ एक ट्रेड को फाइंड होने में, राइट? बिकॉज हर बारी तुमको एक ट्रेड नहीं मिलेगा. एवरी टाइम एवरी ट्रेड इज़ डिफरेंट एंड एवरी थिंग इज़ डिफरेंट इन एवरी मार्केट कंडीशन. समझ रहे हो? तो हर चीज़ का वेट करने के बाद ही सब कुछ चीज़ें तुमको देखने को मिलेगी. ठीक है? नो, अगर इसको ब्रेक करता है देन देर इज़ नो चांसेस दैट इज़ गोना गो डाउन. अगर बॉडी इसको ब्रेक करता है, एग्जैक्टली टोल्ड यू, could be a manipulation, hold up. बॉडी क्लोज नीचे चाहिए. 9 seconds. Hmm. Hmm. 4607, 4607, 4607, 4607. Okay, cool. Hmm.
ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखते इधर क्या हो रहा है। 5 minute, what is there? No, yeah, it is consolidating at this area. There are high chances, as I told you, right, coming to this area, right? This is very important area. अगर तुम इसको ध्यान में रखते हो, then you'll be able to see lot of things. ठीक है? ना too bad. Too bad. Need rejection. ठीक है, too many rejections on a 5-minute candle, and I feel that's a good sign. I've seen this somewhere, okay? I've seen this somewhere. ठीक है, ठीक है। Not looking nice. ठीक है, 1 मिनट अभी तक बचा है, 1.5 मिनट बचे हैं। लेट मी सी। आई हैव नो इशू, अगर इसको कट भी करना पड़े, आई हैव नो इशू, बट लाइक आई एम टेलिंग यू देयर इज रीजन दैट आई टुक दिस ट्रेड, राइट? मुझे पता है ओवरऑल मार्केट बुलिश है, एंड बट आई हैव सीन दिस सेटअप। मैंने इससे पहले इसको प्रैक्टिस किया है, इसको बैक टेस्ट किया है। लेट मी सी, अगर ये मेरे वर्क में, मेरे फेवर में वर्क करता है, देन विल बी एबल टू ट्रेड दिस सेटअप इन फ्यूचर। ठीक है, बट अभी फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है तुमको? 1 मिनट बचा है। अगर एक कैंडल यहाँ से रिजेक्शन देना चाहिए, अगर रिजेक्शन नहीं देता है, दैट इज़ टू बैड। ठीक है, ठीक है। इसके नीचे रिजेक्शन चाहिए वाला क्या? ठीक है, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। Nice, love that. No, 13 seconds cannot fuck this shit. एक पुल बैक,
एक एक पुल बैक। ओके नाइस, ठीक है, नॉट बैड। येस आई नो मैंने जानबूझ के उतना ह्यूज रखा है बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे मैं वाई एम टेलिंग यू ऑल दैट डू नॉट सेल, बिकॉज मैंने एस एल जानबूझ के उतना बड़ा रखा है। मैं उतना ले सकता हूँ रिस्क, डोंट वरी गाइस, मेरा टारगेट भी बड़ा है, ठीक है, मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ। दैट इज़ वाई मैं जब बोल रहा था लाइक व्हेन समवन वाज सेइंग दैट आई वांट टू बाय सेल फ्रॉम हियर, आई सेड नो, समझ रहे हो? I said no. If I am taking a risk, I am going for something, or I am like practicing something, that doesn't mean that like कि उसके साथ लोगों का भी मैं पैसा रिस्क में डालूँ। मेरा पैसा मैं रिस्क में डाल सकता हूँ, राइट? बिकॉज आई डोंट केयर, इट्स ओके, लाइक आई कैन अर्न दैट अमाउंट टू टुमारो ऑल्सो। बट अगर मेरे को कोई टेस्ट करना है, मेरे को टेस्ट करना है वो चीज़, समझ रहे हो? सो वही वही है। और कोई नहीं, मतलब ये ऐसे अपन कभी भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर जाता है इस लेवल पे, इस लेवल से भी मैं कट कर सकता हूँ, मेरा वही लेवल है, राइट? सो डजंट रियली मैटर, ठीक है, डोंट वरी। Too slow, dude, too slow. Either you go up or either you go down, but like don't accumulate इतना ज़्यादा ना, that's the thing. ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है देन इट्स गोना हिट द एसएल, ठीक है? यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं होता है देन इट्स गोना हिट द एसएल। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है देन आई कैन माइट से दैट वी आर बैक इन द गेम। ठीक है, प्रॉफिट में हम आ चुके हैं, नो इश्यूज़। देखो मैं यहाँ से भी कट कर सकता हूँ, मेरा जो लॉस हो रहा था जितना ज़्यादा बड़ा, राइट? अभी जो कैंडल जिस तरीके से मूव कर रहा हूँ यहाँ पे मैं $100 पे क्लोज कर सकता हूँ, बट क्या मैंने इतना बड़ा लॉस लिया जस्ट टू क्लोज ऑन $100? नहीं, राइट? आई माइट बी प्लानिंग समथिंग बिग, राइट? कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ ना मैं इसके साथ। कितना मैनिपुलेट किया देखो, अब जाके थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट अगेन वहाँ पर एक सपोर्ट है। सो आई डोंट वांट बी साउंड टू कॉकी राइट नाउ। मेरे को बहुत ज़्यादा कॉकी साउंड नहीं करना है अभी तक, जब तक
मैं 101% नहीं कंफर्म होता जो मुझे चाहिए वो अगर हम्म हम्म ठीक है। अम, इसको हटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है अभी। 230 इज द प्रॉफिट। ठीक है, आई डिड नॉट इवन ब्लिंक। अगर तुमको लगा कि मैं डर रहा हूँ या मुझे फोमो हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, प्लान था, प्लान के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। अभी भी ज़्यादा कॉकी साउंड नहीं करते, होल्ड करता है। ठीक है, ठीक है, कूल, आ जाओ। हम्म। गुड वन। $300, 330। ये देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये लेवल पे। फिर से वहाँ से सपोर्ट लिया है, समझ रहे हो? बट जो चीज़ है वो चीज़ वैसी रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 मिनट्स रिमेनिंग। चेक कर लो भाभीओ। 300 पे एग्जिट, इजीली एग्जिट ले सकता है। ठीक है, 300 USDT पे इजीली एग्जिट ले सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट मैंने इतना ज़्यादा उसको होल्ड किया है अभी। सो अब यहाँ पे तो मैं कट नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ बट यहाँ पे तो मैं कट नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हो? जब पूरी दुनिया बाइंग कर रही थी हमने वहाँ पे सेलिंग किया, एंड दिस इज़ द रिजल्ट दैट यू आर एबल टू सी राइट नाउ। ओके, प्योर प्राइस एक्शन, नो गैम्बलिंग, वी वेटेड। हमने सारी चीज़ें देखी, जैसे मैंने पहले भी बोला था। हमने ये पूरा होते हुए देखा, पूरा डंप देखा हमने, उसके बाद एक पंप भी देखा। बट आई टोल्ड यू यहाँ से भी हम बाई नहीं करेंगे बिकॉज आई हैड नो सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशंस कि जहाँ से हम यहाँ अच्छा खासा सेलिंग या बाइंग कर सकें। ठीक है, आई डोंट डू विद एनी थिंग विदाउट रीज़न। सो अगर ये भी मेरे फेवर में जाता है, विल एक्सप्लेन दिस ट्रेड फ्रॉम द स्टार्ट, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों ट्रेड लिया, सब कुछ तुम्हें पता चलेगा अगर ये हमारा टीपी हिट होता है तो। ठीक है, दिस इज गोना बी TP1, दिस लेवल। ठीक है, ये वाला, एंड दिस इज गोना बी TP2।
बट डेफिनेटली टुडे इज़ लाइक अ फ्राइडे, तो थोड़ा और अकुमुलेशन, थोड़ा एक कंसोलिडेशन तुम्हें देखने को मिलेगा. एंड यप, हाउ मच इज़ द प्रॉफिट इज़ $280 राइट नाउ. कूल. बॉडी ऊपर क्लोज हुआ है सपोर्ट के एग्जैक्टली जो मैंने मार्किंग किया है, सो दैट इज़ नॉट द गुड साइन. ठीक है, बट I know for the fact there is a lot of liquidity pending below this level. ठीक है, eventually if it wants to go up this level it has to come take that liquidity. It has took that liquidity जैसे मैंने पहले ही बोला था. ठीक है, but there is more to it. ठीक है, रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से. इनवर्स एफएजी. ठीक है, ध्यान से समझो यहाँ पर क्या हो रहा है. इनवर्स एफएजी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. वी वांट ये वाला इसको बाउंस करे, उसको इनवैलिडेट ना करे. राइट, देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग. invalidating the effigy and then like just tapping the effigy and then coming down. ठीक है, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट उसको टैप इन करे, इनवैलिडेट ना करे. यहाँ पे ना टैप इन किया ना इनवैलिडेट किया. और 3 मिनट्स पेंडिंग, 3 मिनट और थोड़ा वेट करो. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कीप द आई ऑन द ट्रेड. ओके, माय बैड. आवाज़ आ रही है अभी? हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? चलो, we're hyped, we're back in the game. I don't want to sit down and just like look at this. I want to stand up and observe every move that is happening in the market right now. ठीक है, हम यहाँ पर सेल साइड पे एक बढ़िया सा हमने ट्रेड ले लिया है. The thing is that there is a fair value gap on the upside, right? It is a very important fair value gap, right? If market wants to go up, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है then it will definitely invalidate that fair value gap. But if it really wants to come down then it will definitely touch that fair value gap and then come down, right? यहाँ पर 43 seconds बचे अभी, 43 seconds right now, and we are able to see that market is directly tapping into that fair value gap. What we really want to see, we want to see that market will go up to that level, right? इसका जो सेंटर है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगर सेंटर ब्रेक होता है then that is not a good news for us. You're getting my point? Everything is very clear, everything is very much clear to everyone. ठीक है, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ उसको. ठीक है, चलो अभी वेट करते हैं.
अगर इसका SLB हिट होता है then there is no issue, right? Because then I'll be able to understand that what is the thing that I need to figure out next time when I see something like this, right? Because I'm gonna act completely opposite to what is happening right now in the market. You're getting my point? And the reason the SL is so big, the reason is SL is so big because I know अगर ऐसे पोजीशन में मार्केट है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज़ गोना टेक सम टाइम, इट इज़ गोना टेक आउट सम स्मॉल SL वाले लोग, समझ रहे हो? सो आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज पीपल जिनका SL स्मॉल हो. अभी ये वाला हमारा लेवल है, इसको हम होल्ड करेंगे जब तक ये अभी TP हिट नहीं होता है. द स्ट्रीम इज़ गोना कंटिन्यू वैसे के वैसे, ठीक है? एंड यू गाइस कैन have your water, drink water, ठीक है, right now, and watch your every candle that is going on. आस्क मी क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन है तुम लोगों को. सारा फ्री में नॉलेज तुमको अभी मिल रहा है, आगे चल के नहीं मिलेगा. मेक श्योर यू गाइज वॉच एंड सी एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है? दिस इज़ अ ट्रेड गोइंग ऑन. How much is the, and definitely it should be in loss or profit right now. Well, let me see. It is in profit, right? It is in profit. So yeah. I'm standing because I got bored. बैठे बैठे बोर हो गया था मैं, ठीक है? How am I looking? चलो. जितने लोग हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जो लोग यहाँ पर आए, ठीक है? डेली दो टाइम यहाँ पे स्ट्रीम देखने को मिलता है तुमको, मॉर्निंग में एंड रात में. नाइस. I like this candle, but at the same time we need more rejection, right? We need that support to break. We need this support to break, this support. समझ रहे हो? चलो होल्ड करो. ठीक है, आ जाओ. 2 मिनट और बचे उस कैंडल में. 2 minutes more. What up, boys? We're back, and yes, this is a current position that we're holding right now. Okay, I am gonna hold this for a long time, ठीक है? सो अगर तुम में पेशेंस है, सिट डाउन, रिलैक्स, बिकॉज दिस हाउ आई ट्रेड डू, दिस इज व्हाट आई डू फॉर लिविंग. मैं चार्ट देख के बोर नहीं होता हूँ, मेरे को ट्रेडिंग स्ट्रीम करने में बोर नहीं होता है. दिस इज़ द थिंग दैट आई लव द मोस्ट. आई एम गोना स्ट्रीम द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. आई टोल्ड यू ऑल. सारे लोग, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ओके? एंड येस, लेट्स गो, लेट्स सी दिस, ठीक है? अभी क्या प्रॉफिट चल रहा है हमारा फिलहाल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. हम प्रॉफिट में ओवरऑल $50 समथिंग, राइट? गुड, नॉट बैड, ठीक है? Okay, we need that support to, like, market to take out that support. That's the one thing that we are really hoping right now. चलो. Very close to the support. How many seconds? 57 seconds are there, okay, for this candle. इसके बाद अगर एक ब्लैक कैंडल हमें दिखती है, देन इट इज़ अ गुड कन्फर्मेशन और गुड साइन दैट व्हाट वी वांट इट विल हैपन फॉर श्योर, ठीक है? Hmm. 31 seconds. What is happening in BTC? Let me see. Okay, as I told you that market will go up and it has to come down to that level that I mentioned before this, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली दैट मार्केट विल कम डाउन टू दैट लेवल, बट थोड़ा अभी टाइम है उस चीज़ को भी, बट इवेंचुअली इट्स कमिंग डाउन. कूल.
चलो, नाइस ब्लैक कैंडल, वी नीड मोर रिजेक्शन, ठीक है, कूल, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। देखो, हो सकता है ऑलमोस्ट लाइक 11 बजने वाले, हो सकता है थोड़ा 10 मिनट में एक अच्छा खासा मूव आ जाए, जिससे हमें एक क्लैरिटी मिल जाए कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। आई नो मार्केट क्या करना चाहता है, बट द ओनली थिंग इज़ दैट जब तक वो चीज़ ऑन चार्ट प्रूव नहीं होगी तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। सो इसलिए थोड़ा होल्ड करो, थोड़ा पेशेंस रखो, एंड देन यू विल बी एबल टू सी सम क्रेजी मूव्स। कूल, चलो। 4 मिनट इस वाले को, एक बार मैं इसको 1 मिनट पे क्लोज कर देता हूँ। क्या देखने को मिल रहा है तुमको ओवरऑल? ठीक है, नाइस, 1 मिनट पे लुक्स नाइस, नॉट बैड। यो, लेट्स फकिंग गो। गुड, 120 इज द प्रॉफिट राइट नाउ, नाइस। 260, ठीक है, मोस्टली ये वाला कैंडल ब्रेक कर देगा वो वाले सपोर्ट को जो हमें चाहिए था, ठीक है। आई थिंक दिस कैंडल इज मोर देन इनफ फॉर दैट, वेल केपेबल, वेल केपेबल। कितना? 10:35 का कैंडल है, राइट? चलो, कूल। नॉट लुकिंग गुड, द रिजेक्शन इज नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। ठीक है, दिस कैंडल इज सो बैड। इसलिए से ऐसे बढ़ाएं क्योंकि मुझे पता है इस लेवल पे मैनिपुलेट करेगी, मुझे पता है इस लेवल पे मैनिपुलेट करेगी, ठीक है। नोप, अगेन मैं नहीं चाहता कि कम डाउन हियर, से मैंने बोला था मैं नहीं चाहता कि उस लेवल पे अभी ये वाला कैंडल जाए, राइट। एटलीस्ट आई डोंट नॉट वांट कि ये जो वाला यहाँ पर एरिया दिख रहा है तुमको, ये वाला लाइन जो मैंने मार्क किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होता है इसका मतलब मार्केट ट्राइंग टू इनवैलिडेट दिस फेयर वैल्यू गैप, एंड जब मार्केट कोई भी फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिडेट करता है, द इनडायरेक्ट मीनिंग इज दैट मार्केट वांट्स टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द इनवैलिडेटिंग एनी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। व्हाट इज द फेयर वैल्यू गैप? द रीजन बिहाइंड द फेयर वैल्यू गैप इज ऑर्डर्स। सो डेफिनेटली व्हेन द ऑर्डर्स आर पेंडिंग, मार्केट आर गोना टेक दैट ऑर्डर एंड कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन। सो ये वाला जो मूव है ये थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, बट स्टिल आई एम प्रीटी मच पॉजिटिव दैट ये वाला कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगा। येस, यू कैन सी दैट, एंड यप, अगर ये वाला नीचे क्लोज होता है देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट व्हाट आई एम एबल टू लाइक सी राइट नाउ द टारगेट विल बी एबल टू फुलफिल दैट वेरी सून, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज देखो अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, टाइम 11 हो चुका है, ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट बचे 11 होने में। तो इस टाइम पे थोड़ा मार्केट मैनिपुलेट करेगा डेफिनेटली, बट आज फ्राइडे, तुम ये चीज़ भी मत भूलना, टुडे इज़ फ्राइडे। तो फ्राइडे में हो सकता है और अच्छे नेक्स्ट मूव्स भी हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
हमेशा मार्केट जो मेन मूव्स होते हैं, जो असली मूव्स होते हैं, वो 11 के बाद आते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए थोड़ा मैं और वेट कर रहा हूँ और पेशेंटली ये चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ एंड इस ट्रेड को देख रहा हूँ, समझ रहे हो। ये ट्रेड अगर हमारे फेवर में जाता है दैट इज़ वेरी गुड, अगर हमारे अगेंस्ट जाता है दैट इज़ लाइक मोस्टली लाइक नॉट पॉसिबल। नहीं मतलब हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो तुमको सारा इसका डिटेलिंग में बता दूंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या था, हमने क्यों ये ट्रेड लिया था, एंड तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली समझ जाएगी। डेली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं डेली यहाँ पे आया करो, तुमको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी एंड बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी डेफिनेटली तुम लोगों ने मुझे बहुत कम टाइम देखा है, तो तुम लोगों को कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। एंड वही मेरा रीज़न है तुम लोगों को सारी चीज़ें दिखाना। सो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, तुम लोग कुछ क्वेश्चन है तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। कोई भी अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है कोई भी ट्रेड को एनालाइज करने में या कोई मार्केट को एनालाइज करने में, राइट, तो आई कैन हेल्प यू गाइस, राइट। जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी अभी तक मैंने गैदर किया है, जो भी मैंने लिटरली अपने अकाउंट को मैं यूज़ करता हूँ उसको टर्न करने में, राइट, और अपना जो प्रॉफिट बड़े बड़े निकालने में, जो भी मेरा नॉलेज है आई एम रेडी टू शेयर विथ यू ऑल फॉर फ्री एज ऑफ नाउ, ठीक है। आगे चल के यू नेवर नो। हाँ जी, तो दिस इज़ द ट्रेड, दिस इज़ एवरीथिंग। अभी इस तरीके से तुमको यहाँ पर होल्ड अप, ठीक है। कितना टाइम हो चुका है? ऑलमोस्ट 2 घंटा हो चुका है स्ट्रीमिंग को। इट्स टेकिंग सो मच टाइम। अनदर रिजेक्शन। चलो ठीक है, अभी इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं ये वाले लेवल को, ठीक है। मैं आपको, क्या मेरे यहाँ पे लैग हो रहा है? ठीक है। सो इस ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। ये जो वाला ट्रेड है मैं अपने जो मेंबर्स है, कम्युनिटी मेंबर्स, वहाँ पर शो कर दूंगा एंड जैसे ही वहाँ पर आप आ जाओगे आपको दिखेगा इसका रिज़ल्ट क्या है एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डिटेल देयर, ठीक है। सो अभी जो जो लोग यहाँ पर है सब्सक्राइब करो, फॉलो द चैनल एंड आई विल सी यू मे बी टुनाइट और टुमारो इन द मॉर्निंग, ठीक है। टुनाइट नहीं तो टुमारो इन द मॉर्निंग यू विल बी एबल टू सी। कल तो डेफिनेटली हम BTC फुल ट्रेड और कल पूरा ट्रेड करेंगे एंड येस देन यू विल बी एबल टू सी सम क्लियर एज मूव्स, ठीक है। चलो, दिस इज इट फॉर टुडे स्ट्रीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, डू वट एवर यू कैन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू गाइज इन सम टाइम on the community channel. Okay, bye bye.